you permission, Commanding Officer Colonel R.K. Sharma, 1 Chandigarh Girls Battalion, I, Major Neelam Kumari, is going to conduct webinar on National Science Day. Today is National Science Day, and congratulations to everyone that we are celebrating Science Day. आज इस वेबिनार में हमारे साथ 2 स्पीकर्स हैं, ऑनरेबल परमजीत सर एंड रेस्पेक्टेड तेजिंदर मैडम, सेकंड ऑफिसर तेजिंदर कौर मैडम. Both are great educator. They are giving their contribution in the field of science education. Since this is science, तो it is not कि हम साइंस वाले ही साइंस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं. नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने का पर्पज ये है कि सभी लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें, अपनी एबिलिटीज दें, साइंस की इम्पोर्टेंस को समझें. सो साइंस डे इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी चेंज हो गई है. वी शुड रियलाइज, वी शुड कंट्रीब्यूट. जिस तरीके से भी हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वी शुड कंट्रीब्यूट. और इस सेमिनार वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए मैं हैंडओवर करूंगी सेकंड ऑफिसर तेजिंदर कौर मैडम को. प्लीज बिफोर आई तेजिंदर मैम स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से कि उनके पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं. शी इज रियली कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट in the NCC field, in education field. She is science teacher. She has received commendation certificate from education department for her services in the field of education, and she is a member of state resource group for developing e-content. एंड ई कंटेंट बच्चों ये सिलेबस होता है जो हम करिकुलम पढ़ते हैं, उसमें ई कंटेंट, उसको ई कंटेंट कहते हैं. तो उस सिलेबस को फ्रेम करने में तेजिंदर मैम का बहुत ही योगदान है. एंड शी इज ए मेंबर ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई है बच्चे, ये भी इसीलिए हुई है कि हम साइंस को वैल्यू दें, इम्पोर्टेंस दें. तो हम आगे मैं हैंड ओवर करती हूँ सेकंड ऑफिसर तेजिंदर कौर मैम को. शी इज ऑल्सो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर. थैंक यू मैम. प्लीज कैरी ऑन मैम. थैंक यू. Thank you so much, Major Neelam. It's nothing so great about us. हम लोग actually ऐसे country में हैं जहाँ पे we had such great scientists, and हमारा जो medieval period है वो इस तरह का रहा है कि हमारे philosophers ने जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम कुछ कर भी रहे हैं. सो ऑल दिस व्हाट यू ऑल सेड, वो बहुत ही मतलब काफी ज्यादा कह दिया आपने. इतना कुछ नहीं हम कर रहे हैं. यस, ऑल्दो कि जितना भी हार्ड वर्क है वो सारा हम साइंस को जरूर समवेयर बीइंग अ साइंस टीचर तो उसको क्रेडिट जरूर देते हैं. बिकॉज टुडे इफ वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और ऐसे टाइम पर जहाँ पे कोरोना जो है इतना ज्यादा फैला हुआ है और there was pandemic all over, students people were hesitant to meet each other. आपस में एक दूसरे से बात करने से कतरा रहे थे. वहाँ पे भी अगर हम लोग ये 2 साल जो है निकाल पाए हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, तो it was because of the contribution of science. So yes, we all are staying connected because of science, and we all are here because of science. So special thanks to science, and yes, National Science Day. We all mean it when we say it. It's all because of the great philosophers of India that the science has reached its status, its value, and it is being valued. Why? Because of its contributions. Let's have a look at a small video which is going to show us the scientific achievers of India.
सो आपको एक छोटी सी वीडियो के साथ दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे अचीवर्स ने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स साइंस। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया के साइंटिफिक अचीवमेंट्स की। रिलीजन, फिलॉसफी, लिटरेचर के साथ साथ एंशिएंट इंडियंस का मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मेडिसिन, आयुर्वेद, योग इत्यादि फील्ड्स में भी इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है। Before I proceed, can you please tell me if the screen is clear to you? And Yes, was the ma'am. Yes, ma'am. voice was audible? Okay, fine. Yes, ma'am. So we go ahead. Okay. आइए हम एक एक कर सभी फील्ड्स के साइंटिस्ट की अचीवमेंट्स की चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मॉडर्न डे मैथमेटिक्स के कई थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस को पता थे, लेकिन प्रॉपर दस्तावेज और प्रचार प्रसार में कमी होने के कारण उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाया जो उनके वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स को मिला है। उदाहरण के लिए हम एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड की पॉपुलैरिटी से बहुत हद तक परिचित हैं, पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी अच्छे से जानेंगे। इनमें सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध ध्यान की। बौद्ध ध्यान ने कई कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम्स दिए थे जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने बाद में रीडिस्कवर किया। जैसे उन्होंने सबसे पहले पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया था, जिससे किसी भी सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया जा सकता था। उनकी किताब सुलभसूत्रा में पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन हमें पाइथागोरस से पहले देखने को मिला है। अगले साइंटिस्ट हैं आर्यभट्ट। नाम तो सुना ही होगा। बौद्धियान की तरह आर्यभट्ट ने भी इंडिपेंडेंटली पाई वैल्यू कैलकुलेट की थी। उनके हिसाब से पाई की अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 3.1416 थी। आर्यभट्ट 5th सेंचुरी एडी के महान मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट थे। 23 साल की उम्र में ही आर्यभट्ट नाम की किताब लिख डाली थी, जो उनके समय की मैथमेटिक्स की कंप्लीट समरी थी। इसमें आपको डेसिमल सिस्टम, नंबर थियरी, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और एस्ट्रोनॉमी पर बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आर्यभट्ट ने सबसे नोटेबल जीरो का आविष्कार किया था। इसके कारण उन्हें अर्थ और मून के बीच निकालने में काफी मदद मिली थी। स्पेस साइंस में आर्यभट्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दिए थे, जो बाद में चलकर सच साबित हुए थे। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने बताया था कि अर्थ अचल यानी इमूवेबल नहीं है, बल्कि अपने एक्सिस पर रोटेट करती हुई एक स्फेरिकल बॉडी है। उन्होंने हीलियोसेंट्रिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अनुसार सभी प्लैनेट्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा उन्होंने सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया था, जिसके बाद लोगों को पता चला कि इक्लिप्स राहु केतु या किसी राक्षस या डीमन का काम नहीं होता है। उनके इन्हीं महान कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए 1975 में लॉन्च हुए भारत के पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। आर्यभट्ट के बाद 7th सेंचुरी एडी में जन्मे ब्रह्मगुप्त ने मैथमेटिक्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। आइए जानते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। ब्रह्मगुप्त का मल्टीप्लिकेशन करने का मेथड आज के मल्टीप्लिकेशन मेथड से काफी सिमिलर था। उन्होंने मैथ्स में जीरो से रिलेटेड ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस किए थे और साथ ही उन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका नामक बुक भी लिखी थी, जिससे अरब्स को इंडियन मैथमेटिकल सिस्टम्स का पता चला था। इस किताब में कई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का भी मेंशन है, जिससे उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स रीडिंग लिया करते थे। हमारे अगले मैथमेटिशियन हैं भास्कराचार्य। आइए अब जानते हैं भास्कराचार्य के बारे में। ब्रह्मगुप्त से 500 साल बाद 12th सेंचुरी एडी में जन्मे भास्कराचार्य उस समय के लीडिंग मैथमेटिशियन हुआ करते थे। उनका जन्म कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम से एक फेमस बुक लिखी थी, जिसमें 4 सेक्शंस थे: लीलावती यानी एरिथमेटिक, बीजगणित यानी अलजेब्रा, गोलाध्याय यानी स्फीयर
और ग्रह गणित यानी मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स। 19th सेंचुरी में जेम्स टेलर ने लीलावती सेक्शन का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, जिससे पूरी दुनिया को भास्कराचार्य के ब्रिलियंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का पता चला था। उन्होंने अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए साइक्लिक मेथड इजाद किया था, जिसे यूरोपियंस ने बाद में इनवर्स साइक्लिक मेथड नाम से पॉपुलराइज किया। इसके अलावा जैन गुरुओं ने भी मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत योगदान दिया था। महावीराचार्य उनमें से एक थे। चलिए जानते हैं महावीराचार्य के बारे में। महावीराचार्य ने 850 एडी में गणित सार संग्रह लिखा था, जो आपको आज की एल्जेब्रा टेक्स्ट बुक से काफी मिलता जुलता लगेगा। उन्होंने जॉन नेपियर के एलसीएम निकालने के मेथड से बहुत पहले एलसीएम निकालने का मेथड इजाद कर लिया था। मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ एंशिएंट इंडियंस ने साइंस के फील्ड में भी बहुत योगदान दिया था। आइए देखते हैं। So dear students, I hope ki you must be feeling very proud that our scientists, our achievers, they were the ones who did the first discoveries, right? And yes, the lack was that this publicity that they couldn't do, and that is why they are not that famous as much as the Western philosophers are. लेकिन हमें प्राउड फील होता है कि ये सारी बातें जो हम आज जान रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, वहां के साइंटिस्ट के से, उसकी बजाय ये पहले ही, काफी पहले हमारे फिलोसोफर्स, हमारे साइंटिस्ट इन चीजों को बता चुके थे। लेकिन जस्ट बिकॉज वो चीजें जो थी प्रॉपर तरीके से जो है डिस्प्ले नहीं हो पाई, दैट वाज द रीजन कि वो आज उनका नाम जो है वो वहां पर नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। browser you're using is allowing your behavior to be exploited and monitored. साइंस। साइंस की बात करें तो सबसे पहले नाम कनाद का आता है। 6th सेंचुरी बीसी में जन्मे कनाद वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी से ताल्लुक रखते थे। उनका असली नाम औलुक्य था, पर बचपन से उनकी रुचि कण यानी माइन्यूट पार्टिकल्स में थी, जिसके कारण उनका नाम कनाद पड़ गया था। आश्चर्य की बात यह है कि डाल्टन से करीब 2600 साल पहले उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के काफी करीब थी। कनाद के बाद 6th सेंचुरी एडी में जन्मे वाराहमिहिरा एंशिएंट इंडिया के दूसरे वेल नोन साइंटिस्ट थे। तो जानते हैं वाराहमिहिरा के बारे में। वाराहमिहिरा ने हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में बहुत बढ़िया काम किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण लें तो उन्होंने ऐसे 6 जानवरों और 30 पौधों के नाम बताए थे, जिससे ग्राउंड वाटर का पता लगाया जा सकता था। इसके अलावा बृहद संहिता नामक किताब में वाराहमिहिरा ने अर्थक्वेक प्रेडिक्शन पर एक पूरा चैप्टर लिखा था। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम की किताब भी लिखी थी, जिसमें 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स को डिस्क्राइब किया गया था। एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ केमिस्ट्री के फील्ड में भी एंशिएंट इंडिया बहुत आगे था, जिनमें सबसे प्रमुख नाम आता है नागार्जुना का। जानते हैं नागार्जुना के बारे में। 10th सेंचुरी एडी में जन्मे नागार्जुना ने केमिस्ट्री और मेटलर्जी में कमाल का काम किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने के रिसर्च में लगा दिया था, जिसे एल्केमी भी कहा जाता है। ऑल्दो वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, पर उन्होंने इस प्रोसेस में एक ही डेवलप कर ली, जो आज भी इमिटेशन हेलो हो गया
डिस्कशन किया गया था, जो आज भी रेलेवेंट है। मेडिकल साइंस के दूसरे डिवीजन सर्जरी के फील्ड में सुश्रुत का हाथ पूरे एंशिएंट इंडिया में कोई नहीं पकड़ सकता था। प्लास्टिक सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी और कैटरैक्ट सर्जरी यानी ऑप्थेल्मिक सर्जरी के लिए सुश्रुत आज भी याद किए जाते हैं। उस समय नाक या कान काट देना कॉमन पनिशमेंट हुआ करता था। ऐसे में सुश्रुत द्वारा की गई सर्जरी से लोगों को नई पहचान मिली थी। सुश्रुत संहिता नाम की किताब में उन्होंने सर्जरी के अलावा 1100 बीमारियों और 760 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी बताया था। ये प्लांट्स आपको आज कई घरेलू नुस्खों में मिल जाएंगे, पर जरूरी नहीं है कि सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी से ही हो जाए। कुछ बीमारियां खराब लाइफस्टाइल के कारण भी हो जाती हैं। प्राचीन भारत ने ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए योग का इजाद किया। पतंजलि एंड योग हीलिंग विदाउट मेडिसिन पर फोकस करता है। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार इसमें फिजिकल एक्सरसाइज यानी आसन, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम के कॉम्बिनेशन से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बैलेंस अचीव किया जाता है। योग शब्द संस्कृत वर्ड युज से आया है, जिसका मतलब टू यूनाइट होता है। योगिक स्क्रिप्चर्स की माने तो योग करने से इंडिविजुअल और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक हो जाते हैं, जिससे माइंड और बॉडी, ह्यूमंस और नेचर में परफेक्ट हार्मनी एस्टैब्लिश होता है। योग के इन बेनिफिट्स के कारण ही 2015 से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। भारत के लिए उसकी रिच एंड ग्लोरियस पास्ट की ग्लोबल रिकॉग्निशन इससे बेहतर और क्या हो सकती है। कंक्लूजन दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, एंशिएंट इंडिया साइंटिफिक अचीवमेंट्स के लिहाज से एक गोल्डन एज था। हिंदुस्तान में डेवलप्ड कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अरब्स द्वारा यूरोप तक पहुंचाए गए थे और ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया आने के बाद लीलावती जैसी बुक्स रीडिस्कवर की थी। एंशिएंट इंडियन साइंटिफिक ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए आज भी इंडियन साइंटिस्ट्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में अपना योगदान देते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है साल 2000 के आने से पहले Y2K कंप्लायंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स का बनाना। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे साइंटिस्ट्स ने दिन रात मेहनत कर पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम, एयर ट्रैवल इत्यादि को क्रैश होने से बचाया था। हिस्ट्री सीरीज का ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट्स। So I am very sure students you must have liked and there must be surprise amongst you कि इतना कुछ जो हमें शायद पता ही नहीं था, ये हमारे ही philosophers थे और हमारे ही scientists थे जिन्होंने ये सब किया। तो yes, it makes us feel very proud that we belong to India where the ancient scientists, the philosophers, the great Maharishi Kannad, उनकी हम भूमि में जन्मे हैं, जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है हमारे पूरे वर्ल्ड की साइंस के लिए। एंड साइंस और टेक्नोलॉजी जो दोनों साथ साथ ही चलते हैं, जहां हमारा टॉपिक रहा कि इनोवेशंस यानी जो जो बदलाव आए उन्होंने किस तरह से हमारी लाइफ को प्रभावित किया है, वह हम आज देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना महामारी के साथ in this pandemic also our doctors, our scientists, they have been working very hard so that they could give us a vaccination and we could, today if I am mask free, the reason is that yes, I am fully vaccinated and I am sitting at a distance of this much gap, so now I know that yes, I am safe, right? So this is all from my side. Now I would like to introduce with you नेक्स्ट हमारे जो आज के स्पीकर हैं बेटे, आपको मींस आई वुड लाइक टू से कि यू ऑल आर वेरी लकी इनफ कि आपको मैं उन सर से मिला रही हूं जो हमारे बीच आज हैं और हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर परमजीत सिंह सर, जो हैं हमारे साइंस के एचओडी हैं हमारे स्कूल में, और वैसे सर जो है सीबीएसई अवार्डी हैं। सर को सीबीएसई की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। उसके अलावा चंडीगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट ने भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सर को स्टेट अवार्ड दिया है। देन सर विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड विनर भी हैं
और सर कितने ही इसके साथ साथ अलग साइंस की जो योजनाएं हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। इनके साथ साथ एनवायरमेंट सोसाइटी जो है उसमें भी सर एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वह निभा रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, सो यू आर लकी टू हैव विद यू मिस्टर परमजीत सिंह, जो कि आपको आज मतलब नेशनल साइंस डे के दिन इससे अच्छा आपको जो है वक्ता नहीं मिल सकता था। तो आपके बीच में है अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर नेशनल साइंस डे के लिए। और सर जो है 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को, आजादी के अमृत महोत्सव को भी बहुत ही जोश के साथ और लगन के साथ मना रहे हैं। और उसी को दिखाते हुए अब मैं सर से कहूंगी कि सर जो है नेक्स्ट आगे का जो है सर ले लें। Thank you, Tejendra ma'am. So this is great opportunity for me to act as a resource person here, and I am associated with the NCC also. I am NCC certificate holder, and since 9th class up to MSc final, I was in NCC, attended many camps, and even attended army attachment camp also at Jhansi of 21 days, and also traveled, or I took a ride in the tank 72 Soviet Rus tank. So the moment Mrs. Tajinder Kaur, second officer, asked me to join this webinar, really this is a moment of joy for me. And whatever Mrs. Tajinder told about me, just a simple result of hard work, and I believe in simplicity. Awards and all these things are part of your journey. So one should never work for the award. One should work for the community, students, and all other dignitary present here. Thank you very much for giving me this opportunity. And I congratulate all of you students, dignitaries, and all officers of the military. Happy Science Day. So not taking much time, I would like to share my screen. I hope my screen is visible. So now I open the curtain of this program, and let us listen this beautiful song. मैंने भी कई बार गाया है अपने एनसीसी लाइफ में।
So thank you very much. This is the inauguration from my side. In your banner also, I have seen 2 robots. So I have created this animation for this program for one Chandigarh girls BN NCC, and this is a great moment for me. So let us talk about integrated approach in science and technology for a sustainable future. So this picture clears many things for our students as well as we all, that Earth is our mother and we should go for some alternative sources of energy like solar energy, wind energy. We should plant trees. So here sustainable future means conserving the present and enhancing the present situation and improving the present situation, so that life of all citizens of this world becomes happy, disease free, all become healthy. So this picture tells all about the sustainable future and how can science and technology help in this goal. This is very important because we have science and technology, a very great tool. If we use it for development of our people, citizens, for improving the environmental qualities, improving the air quality, improving the soil, improving water bodies, and improving our ecosystem. This all can be achieved through science and technology. So science and role of science and technology is very important, and we need integrated approach. So integrated approach means integrating all the spheres of the knowledge like environment, like social science, political arena, and uh, physics, chemistry, maths, medical science. Every walks of the life should be integrated in such a way that we lead a happy life. We lead a corona-free life. As Ma'am Tajinder also told us, that we are free from corona. We are free from mask now because of the science and technology, because we have developed a vaccine and India has contributed. This is biggest achievement of 75 years of independence. आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि इंडिया ने वैक्सीन को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया है. So कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लाएं, हाउ वी कैन डेवलप दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच. देयर आर फ्यू प्रिंसिपल्स. So first principle is respect and care for all. So when we respect and care for all, so it includes everything: our ecosystem, our surrounding, our neighborhood, our city, our village, our country, because we are caring for all. We are sharing as well as caring. We are caring for all. We respect each other. When we respect each other, we take care of health of our individual, of the relationship, our friend, our colleague, because we are caring for each other. We are caring for our environment, ecosystem. So this first principle, if we integrate in our education system as well as in all systems, everywhere, administrative setup, administrative establishment, if this approach is there, so how can we integrate these things in science and technology? So there will be no war in the world if we respect and care for all. So there will be disarmament over the world. Conflict will be over in the world because we respect our neighbor, we respect each other. So this is the largest, this is the main principle. I think we can integrate science, technology for sustainable life. We can integrate this principle. We need to integrate this principle. We need progress in science and technology along with these basic principles, which helps us to sustain our life on this globe Earth. We can be free from environment pollution because we care for all. We respect each other. So we will take care of farmer also. We will take care of labor also. We will take care of construction material, which material is required, which is eco-friendly. Everything in my view, this first principle is the, I think, backbone of sustainable living or sustainable future. Second principle is leading a community life. So again, this first principle, we can say embedded in this, leading a community life.
We should not focus on nuclear families. We should not remain isolated. We should integrate with each other. Collectivism should be there. Collectively, we should work. Teamwork should be there. We should facilitate the aspirations of our citizens. Teachers should facilitate the aspiration of students. Colleagues should facilitate the aspiration of each other, so that all grow. We respect for each other. These things are very important. If we just focus on science and technology, that's all. It is not enough. That's why we are now in this stage of crisis all over the world. Deteriorating environment, deteriorating health, new diseases, everything is taking place because we are developing in science and technology only. We are not integrating the basic principle to all the innovations and all the development which are taking place. So this is very important. This is the second principle. And another principle, inculcate the habit of saving. Saving what? Saving wastage, saving water, saving environment. Okay, saving your self energy, involving your mind in creative works, avoiding violent atmosphere, avoiding violent association, avoiding poor association, creating good environment on the earth. This habit needs to be inculcated. And I know our NCC wing, because I am a NCC certificate. I have learned many things from the NCC devotion, dedication. And what I am today is because of I was in NCC from 9 to MSc level. I learned hard work there. So NCC has inculcated habit of everything in me. Love to the country, love to our friends, care for our friends, care for our relationships. All these things. We need a setup. Otherwise, science and technology development in science and technology will be lame. We will not reach anywhere, and life will not be on the earth. So we need to integrate these principles in every aspect of the life, every development of the life. Adopt minimalism. We should adopt our approach such that we get efficiency in production, in distribution, consumption, in all system, cost effective, in a cost effective manner. This should be our approach, because if we are cost effective, we will save trees, we will save water, we will save minerals, because we are cost effective. We are searching the solution which is cost effective. This is very important. So this principle should be there in all development of science and technology. So last principle is responsible decision making. We should create such a citizen, such an individual who is perfect to take the decision, take the ownership. We need perfect decision. These 5 principles, if we incorporate or integrate in our all development of science and technology, definitely we will lead a good life, healthy life, and prosperous life, peaceful world, conflict-free world, because 5 principles are everywhere. Everywhere. Now a time, many countries are assessing the humanity quotient, happiness quotient among citizens of their country. New word has emerged now, happiness quotient. So happiness quotient decides what is the state of the country, or what is the position of the country in happiness. And happiness can only become if we integrate these principles in our development, science and technology, because science and technology is everywhere. So this is a broader view of sustainable future. Future is sustainable if there is no poverty, there is no hunger, good health, well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure,
reduced inequalities, sustainable cities and communities. Now in India, see, the concept of smart city is emerging. These all components should be there in the smart city. Only then we can say the city is smart. So now, dear participants, my dear officers and all, these principles, if we find these principles in particular area or particular city or particular region, there is life, sustainable life. There is sustainable life. And science and technology is not the aim. Aim is sustainable future. Aim is sustainable living. This should be the aim, not only the progress. We should use science and technology as a tool to get this goal of sustainable future. And responsible consumption and production, wastage of food, wastage of everything should be avoided. And persons should be responsible in consuming, because human is the biggest consumer on this earth. We consume everything. And this is our responsibility, consume in a wise manner, with a responsible attitude, and with keeping all those 5 principles which I have discussed with all of you, keeping in mind, then we can achieve this goal. Climate action, life below water. We should take care of aquatic life. We should take care of life on land, air, water, everywhere. Life is everywhere. So this is the ecosystem. And Earth is the biggest planet which has ecosystem. Either here everything echoes. यहाँ हम कुछ भी करेंगे, हम कहते हैं कर्म करेंगे तो वैसा फल मिलेगा, because eco is there. अगर आप बुरा करेंगे बुरा होगा, एनवायरनमेंट को डेटेरियोरेट करेंगे, हेल्थ डेटेरियोरेट होगी. ये इकोसिस्टम, व्हाई वी कॉल अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट वेयर we find this ecosystem. Eco means everything will come back to you. Whatever you give to this earth, our environment, that will come back to you. If you release bad thoughts, automatically bad things will come towards you. This is the ecosystem. In my view, this is a spiritual side of the ecosystem for me. Ecosystem not only having good life on earth, every aquatic life, but also your thoughts and everything. This also echoes. So if you have good thinking, you have trained mind is well trained, you will think positively. You will work hard with happiness. Then only we can save this ecosystem. Ecosystem not only the materialistic, this has a spiritualistic approach also. Spiritualism also. Our country has great culture combination of materialism with the spiritualism. So this will lead to the happy life. We can go back in the Vedic era and find how the people were happy, full of knowledge, advanced technologies were there. So all things are missing here now, because our approach is not complete. Total approach is not there. We should integrate those 5 principles among everything. Then only we can achieve these goals: sustainable life in future, peace, justice, and a strong institution. How can if we respect each other? Then the first principle which I have discussed. So here I am just sharing my knowledge. I am not here to means dictate anything. What I have learned from my life, or with colleagues, my friends, relatives, everywhere, I am just sharing my thoughts, and I hope these thoughts will create some change in our society, change in the mindset of our students, young. So last is partnership for the goals. So I enjoy partnership with Mrs. Tajinder Kaur. Great force behind me, motivational force. We have good, healthy relationship, and we respect each other. We work for each other. This is the partnership which we both are now showing to you. So this is the great opportunity. What I know, I have shared. So we are forgetting this cycle. Okay. Because here ecosystem is there, cycle is there. If we break this cycle, life will not be sustained on this earth. We will land in more trouble.
like since last 2 years pandemic is there. Why pandemic is there? Something is behind that. Life is not fit to those 5 parameters. We have not developed keeping those 5 principles, integrating those 5 principles into the development and enhancement and progress. So this is the reason whole community is in trouble. So thank you very much. On behalf of 1 Chandigarh Girls Battalion NCC, now I'll shift over to being a part of NCC association, because yes, as I said, integration is the key, right? So now I am integrating myself as a part of being an NCC officer. So sir, now on behalf of our 1 Chandigarh Girls Battalion, I would like to thank you for being here with us, enlightening our cadets, and I'm very sure the students, cadets must be they must be enlightened, they must be happy to learn how the integrated approach can help us save our environment and be good, good children to our Mother Earth. So with this, we thank you once again for sparing your valuable time. I also thank Major Neelam to providing us this opportunity so that we could be connected with each other. And I also thank Science for giving us this virtual platform to stay connected. So thank you once again, Major Neelam, and thank you, sir, for being with us. थैंक यू सर। और बहुत अच्छा लगा कि आपके पास एनसीसी का एक्सपीरियंस है, और सबसे अच्छा लगा मुझे कि आपने जो सॉन्ग से स्टार्ट किया था सर, वो सॉन्ग इट वाज रियली, मतलब एक जान सी आ गई थी, लगने लगा था कि यार रियली एनसीसी पीपल आर ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, तो अभी लग रहा था कि सभी एनसीसी के हैं, वी ऑल आर इंटीग्रेटेड। ठीक, ओके सर, ठीक है कैडेट्स, आप साइन आउट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। Have a good day, ma'am. Have a good day, everyone. Thank you. Do share screenshots with us also, ma'am. Thank you. Yes, sure, ma'am.